Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. How are you doing? Hey, our precious people of God, it is yet again a blessed and a beautiful day today that we have gathered here to glorify our Lord, our King of Kings. Amen. And we are blessed to minister you through our beautiful sister, our beautiful soul. Yes, so we'd definitely like to thank Spiritual Fellowship Church for having invited us over here, and especially Bishop Samuel and Sister Elizabeth. May the Lord use you mightily, mightily for His kingdom. Amen. Amen. So are we all connected? Please let us know through the comment box below, and we shall all pray for you today. And let's start with the word of prayer. Yes. Our gracious Heavenly Father, I thank and praise you, Lord, for this wonderful day you have added in our life. Thank you for this moment. Thank you for this fellowship, Lord. Thank you for this Spiritual Fellowship Church and all the people who have united to make it a fellowship, O Master. And this evening, when you will be amidst us, glorifying your name through our worship, through our word and our presence, O Lord. In the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Are we all connected? Are you ready to get blessed today? As you see the topic over there, let's go. I have a beautiful verses for you. Beautiful. Lord is going to speak to you today. And I pray, God, Lord, pray, move in their life of Father. मैं बताना चाहूँगी परमेश्वर आपको बहुत टाइप की आशीष देंगे. आप वेट करो. Let's sing, let's glorify our Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. My Hindi is not that good, so we will be trying to speak a little bit of Hindi. And let's worship together and magnify His name. Oh and, yes, आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस सुंदर दिन में और इस सुंदर अवसर में. Amen. And my people, I just want to tell you, when you go to a party, when you go to a birthday party, when you go to any party, then how you are so excited, you dress up so good. I'm going to have a party, or a lot of people will see me, and how you become so excited. And the same way, in the mighty name of Jesus. जी हाँ, जिस तरह से हम किसी भी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं बहुत अच्छे से सवर के कि लोग हमें देखेंगे और ये क्योंकि एक खुशी का मौका है, तो उसी तरह से आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि हम उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें और उनको महिमा दें. Let's party together for the Lord. Amen. Are you ready to party for the Lord? Amen. हम परमेश्वर के लिए आज पार्टी करेंगे, उत्साह करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है. Amen. बहुत महान है, बहुत स्वीट है और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. और हम उनकी आराधना करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Okay, are we audible good? And please comment down below. Our team will be watching you over. Yeah. Hallelujah. We worship you, God. Thank you, mighty God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे. तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरी चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए. तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरी चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु
जाता यीशु, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है जाता यीशु, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, अबरवशिंदा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। Yes, Lord. Hallelujah, we worship you, O God. Lord Jesus, अब हमारे पास आइए परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर, You're watching over us, O Lord. This is a fresh new start, O Father, Lord. Oh, bara bara bare vashinda, adara dare vashinda, abare vashinda ravadari mama. Hallelujah. Wherever you are, my people, wherever you are, my people, say hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lord. Abare vashinda, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। My people, if you're here right now, अगर आप यहाँ हैं आज, not just for a show, my people. सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए नहीं, If you are here to get blessed अगर this आप day, यहाँ हैं आशीष पाने के लिए, then you're welcome in the mighty name of तो Jesus right now. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महान परमेश्वर के नाम से। If you're here to hear Lord's word, then you're welcome in the mighty name of Jesus. अगर आप आज यहाँ हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है महान यीशु मसीह के I नाम से। bless you in the mighty name of Jesus. मैं आप सबों को आशीष देती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। Open up your mouth, my people. If you don't open up your mouth for yourself right now, आप अपने मुख को खोलिए। अगर आप अभी परमेश्वर के लिए अपना मुंह नहीं खोलते हैं, nobody is going to do anything for you. कोई भी कुछ नहीं करेगा। It's you, it's only you, my people. ये आप है और सिर्फ आप है मेरे प्रियो। Hallelujah. Let's sing one more song and glorify Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. Ayabara Vashinda. Yes, Lord. Hallelujah. ले चल मुझे परमेश्वर, चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Yes, once more let's sing. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं प्यासा हूँ परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, Lord, hallelujah, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, oh yes, Father, we are breathing it because of you, oh Father. I'm alive today because of you, oh God. Right now, if I'm in anything right now, Lord, if I have anyone, Lord Jesus, because of you, oh Lord, because of your might and your grace, Lord Jesus, I'm over here, oh Lord. I'm over here, oh Father, Lord. Because of you, oh Father, Lord, I'm sitting safely, Lord. Because of you, Lord, no matter what chaos is in my life, oh Lord Jesus, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो परमेश्वर, I'm looking up to you, oh God, Father, मैं आपके ओर देखती हूँ परमेश्वर, because I know you are the only living God. क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर। Oh yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Abara Vashenda. We worship you, हम God. आपकी आराधना करते हैं My people, calm down your क्योंकि minds आप right लोग now. Calm down your minds right now in the mighty name of Jesus. Just focus on the Lord and His heaven and His kingdom. The blessing that Lord has bestowed in your life. Yes, I'm talking to you in your life. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God,
Yes, Father. That is who you are, mighty God. No matter what, your Father, Lord. You're the only one who is making my life. Say, my people, if you're listening to me right now, say amen. Yes, I receive in the mighty name of Jesus. I receive it in the mighty name of Jesus. Tell my people, if you're there, my people, if you're connected, if you're ready for the blessings. Ah, yes, Lord. Lay behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, yeah, above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all. Like a rose, trampled on the ground, you took a fall and thought of me, above all. Yes, Father. Oh, yes, Lord. You are gracious, O Father. You are merciful, O God. You are the living God, O Master. आप एक जीवित परमेश्वर हैं. आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. If you're listening me right now, my people. तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु. तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु. तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे. तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे. तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु. हमारा वचन तू जिंदा, Oh, yeah, Baba, Baba, Baba. Yes, Lord. जिंदा है यीशु. उजागर है तू मेरा, तू मेरी है ठाव. शांति पाए हृदय में तुझसे हर एक सांस. दुख और तकलीफों में
our God is the only God who is living God. Amen. क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है? My people, don't go according to my face right now, my people. Oh yes. Just go with the Lord face. And if you're really here to get blessed in the mighty name of Jesus, I'm going to tell you how our life got changed because of the Lord, who anointed me with His holy grace, who anointed my sister with His holy grace. Oh yes. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज इस शुभ दिन के लिए परमेश्वर। Oh, yes, आप बहुत महान है परमेश्वर, आप जीवित है परमेश्वर, आप दयालु yes, है God. परमेश्वर, Yes, Father. आप अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। Oh yes, God. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। Oh yes, Father. हम Yes, सारी महिमा तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। Yes, God. हम सारी Hallelujah. स्तुति प्रशंसा की भेंट Oh, yes. तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। Lord, it's all आप yours. हमारे बीच में वास कीजिए परमेश्वर, आप हमारे हृदय में बात Oh, कीजिए yes, परमेश्वर। Father. हम अपने Hallelujah. हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, हम आपके लिए प्यासे हैं परमेश्वर। Ah, आप हमसे Baba बात Reba कीजिए, Shema. हमारे जीवन में आइए Yes, Father. परमेश्वर। Amen. हमारे हृदय में बैठे परमेश्वर। Amen. और आज के सारी स्तुति प्रशंसा और आदर सिर्फ और yes, सिर्फ Lord. तेरी ही हो परमेश्वर। Thank you, Amen. Father. Amen. Thank you, Jesus. So, my people, how are you doing, everyone? Are you ready for the Lord's word right now? What I have prepared for you. In the mighty name of Jesus. And if you're having any audio issues, please comment down below so that my team could help me and tell me what's the problem. And so let's go with the word of God. Let's read Matthew. Let's everyone please open up Matthew 26. And if you're watching and if you have an application of Bible in your phone, so you can please open up the page. You can please write down the comment down below from Matthew 26. Matthew 26. Please open up Matthew 26 from 69 to 73. So let's read. I'm reading from the New King James Version. So it's written. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत ही सही सलामत है, और जैसे कि परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बात किया है, आपसे भी इसी वचन से बात करेंगे। कृपया मेरे साथ सब कोई अपने अपने बाइबल ओपन कीजिए। मत्ती का 26 अध्याय 63 से 69 से 73। So my people, Matthew 26, 69 to 73. Okay. So here I'm reading from a New King James Version. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, "You also were with Jesus of Galilee." Yep. But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, "This fellow was with Jesus of Nazareth." तो मत्ती 26 का 69 से 73 में कुछ ऐसा लिखा है। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, "तू भी यीशु गलीली के साथ था?" उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, "मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है।" जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, "यह भी तो यीशु नासरी के साथ था।" उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, "मैं उस मनुष्य को नहीं जानता।" थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, "सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है।" And again, when we see 72, but again he denied with an oath, "I do not know the man."
And then we see in 73, and a little later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also were one of them, for your speech betrays you." Then again, when we see in 74, then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately a rooster crowed. See, this man Peter, I'm kind of liking this man Peter. Okay, I'm going to tell you. So, and Peter remembered the word of Jesus, who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. Amen. तो इसी तरह पतरस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मुझे एक प्रकार का वो बहुत ही पसंद आ रहे हैं। उन्होंने जैसे कि दूसरी बार इनकार किया, आप देख सकते हैं 72 वर्स में, फिर 73 में उन्होंने तीसरी बार लगातार इनकार किया। उसके बाद 75 वर्स पे आप देख सकते हैं, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, "मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा।" और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। Amen. Let's everyone close your eyes. We'll pray to our God. My Father, my heavenly Jesus Christ, my sweet Jesus, right now, I come to your presence, O Lord. Lord Jesus, whoever is watching right now, you know their life. You know the situation. Let the words I'm going to speak it, Lord Jesus. You put up that words, Lord Jesus, and you speak to them according to their situations, oh God. I pray to you, Father. You anoint me with your words, oh Lord. Let you speak, let you shine. Hide my face, Lord. It's you and only you, Lord. Yes. All my praise and you are the only worthy God, Lord. I give it to you. In the mighty name of Jesus, I pray, amen. Amen. So my people, I just want to tell you, I would be a friendly, all my youths are watching, and okay. So how, is it audible well? सो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बताना चाहूँगी, मैं बहुत ही फ्रेंडली रहूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा और युवती हमें आज देख रहे हैं। Yeah. So today I'm just going to speak on, as you have seen in the topic above, it got to go because I'm ready to grow. आपने ऊपर का शीर्षक देखा होगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है, मैं जाऊँगा क्योंकि I got to go, it got to go, मतलब इसको मुझे जाना देना होगा क्योंकि मैं तैयार हूँ बढ़ने के लिए. Oh yes, इसको मुझे जाने देना होगा क्योंकि मैं तैयार हूँ. If someone can write it in Hindi in a perfect, it's it got to go because I am ready to grow. Can you tell it on Hindi? You can comment down below if you can translate, my people. Okay, so I'm just going to tell you, my people. A few days back, I went for shopping, and there was one beautiful purse out there, and I loved that purse, and I was keeping an eye since a lot of days, since 2 to 3 months. तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार मैं शॉपिंग के लिए गई और मुझे एक बैग बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर वो मेरे आँखों में था ही, तो कुछ लास्ट 2-3 दिनों से, 2-3 महीनों से. Okay, it was like 2-3 months before it was in my eyes, and I always used to go to that shop. I always used to window shop, or I used to see that thing, and I used to come back. No, it's very costly. तो मैं हमेशा उस बैग को देखते रहती थी. 2-3 महीनों से मैं विंडो शॉपिंग करती थी, बस देखकर आ जाती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है. So one day, I said before 3 days, 2 to 3 days, I went to the shop and I saw sale. It's like 70% off sale. तो मैं बस 2-3 दिनों पहले उसी सेम दुकान पर गई और फिर मैंने अचानक देखा कि वहाँ पे सेल था, 70%, 75% ऑफ सेल था वहाँ पे. And by God's grace, I want to bless God, I want to worship God. That bag, I got it so much of discount. तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दूंगी कि उस दिन मुझे ये बहुत ही जितना महंगा था वो उससे कहीं गुना कम दाम में मिल गया. Happiness, let it be small happiness. I always bless God.
ये एक बहुत ही छोटी सी खुशी है, पर मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती Even हूँ। if I take a safety pin, even if I take anything, I always bless God. अगर मैं छोटा सा सेफ्टी पिन भी लूँ या कुछ भी छोटा सा चीज भी लूँ, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। So, okay, let's come to the topic. Then I came to Mama and I said, Mama, you know, I used to see one bag in that shop and I got that bag. And when I went inside, it was 70% off. And again, I bargained it and he gave me a more lesser price than that. तो मैंने आके अपनी मम्मी को बताया ये सारी चीजें कि कितना महंगा था ये, फिर ये 70% ऑफ था, उससे मैंने और कम उसको बार्गेन करके फिर से मैं उससे और भी कम दाम में लेकर आई। Yes. And now, actually, at that excitement, I didn't understand what was going on. But as now I am a blogger and I get PR and I get to involve with a lot of people, I get to understand that sale was put up because तब मुझे नहीं मालूम पड़ा, बट अभी मैं उसके बारे में जब सोचती हूँ, जब मैं एक ब्लॉगर हूँ, पीआर हूँ और बहुत सारी चीजें जब मैं करती हूँ, तो ये जो सेल था हमारे उस बैग पे वो इसीलिए था because you know it wasn't for it was for my benefit, but the shop people, the mall people, they had to get in new inventories because the old stuff was not that profitable. ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये तो मुझे कम दाम में मिल गया, ओके, बट ये उस दुकान ने उन्होंने इसीलिए उसको सेल पर डाला था क्योंकि उनको नया चीज रखना था वहाँ पे उस जगह पे। And they wanted to shift it, they wanted to move that old stuff and sell it out as soon as possible so that they can get the new stock in their mall. तो उनको जल्द से जल्द वो पुराने आइटम्स को बेचने थे ताकि वो नए स्टॉक उधर प्लेस कर So सके। my people, you might be thinking, why am I telling you this long story? तो मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी लंबी सी कहानी बता रही हूँ आपको। Because when I went to prepare a message for you, I just thought that this example, why don't we put up this mindset of that these profitable things in our mind, that why not let going that is not profitable in our life and bring it the profitable things in our life. तो जब मैं मैसेज अपना प्रिपेयर कर रही थी तो फिर मैंने यह सोचा कि जब ये मैं एग्जाम्पल में दे सकती हूँ अपने प्रियजनों को जो भी मेरा वचन आज सुन रहे हैं, कि क्यों ना हम अपने जीवन में उस पुराने चीजों को मूव करके या फिर हटाकर दूसरी चीज ले सकते हैं। Yes, so that's where, do you understand how you need to put up a mindset of let going that is not profitable for your, you need to make space for your joyness, remove your depression, let go your depression, let the joy come inside your heart, let the peace come inside, let the peace take place instead of depression. I'm going to fight it against it. जी, तो जिस तरह से वो आपको बता रही है, आपको बहुत हद तक वो समझ में भी आ रहा होगा कि जिस तरह से हमारे जीवन से जिस तरह वो बता रही है कि प्रॉफिट जो हमारे लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कि हमारे जीवन में एक जो कि हमारे जीवन में एक जरूरत का नहीं या फिर हमारे कोई फायदा नहीं देता है, उसको हमें हटा के दूसरी चीजों पर आना है। So when it comes, your life situation like depression, anxieties, your failures, your failed marriages, your financial stuffs, उसी तरह से जैसे अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, चाहे हमारा पैसों की कोई तंगी हो या फिर हमारे कार्य में कोई रुकावटें हो या फिर हमारे कुछ भी वर्क फील्ड में या फिर जॉब में या कुछ भी चीज में अगर रुकावटें कुछ भी हो, instead of that thing, why don't you put that peace, that joy, that Lord is there with you, that He wants you to make space in your life. उस जगह के बदले जो भी आपका कार्य या फिर कुछ भी चीज में आपको परेशानी हो रही है, उस जगह के बदले आप क्यों ना परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी को उधर रखते हैं। You know, I just want to ask whether it's good in only in English or you want Hindi also. Comment down below.
Yes. So when I just want to tell, when you see Peter, this is not that Peter who walked in front of the who walked on water in front of Jesus. जब हम पतरस के बारे में बात करते हैं तो ये वो पतरस नहीं है जो यीशु के सामने पानी पर चले थे. This is not that Peter who saw Jesus doing miracles after miracles. ये वो पतरस नहीं है जिसने यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था. But this is the Peter who is defeated. पर ये वो पतरस है जो हारा हुआ था. He is suddenly disconnected with the one person, one source he was having faith and hope. वो अचानक से उनसे बंधन टूट जाता है जिस एक इंसान से उसका भरोसा था, उसका विश्वास था और प्रेम था. You understand what am I telling to you? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? When your faith is stripped away from you, जब आपका विश्वास आपसे दूर चला जाता है, what do? क्या करते हैं आप? The same way, why don't you connect yourself to Peter? उसी तरह से आप क्यों नहीं अपने आप को पतरस के जगह पर रखते हैं? Lot of people think this thing that Peter denied Jesus for 3 times and they mocked Peter, but I see in a positive way. बहुत सारे लोग यह देखकर बताते होंगे कि पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया और उसको ठट्टा करते होंगे या फिर हंसी उड़ाते कि उसने ऐसे किया, पर मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे या फिर अच्छे तरीके से लेती हूँ. Because Peter, I'm just telling, it's Peter is in you. Peter is inside you. क्योंकि पतरस जो है आपके अंदर है, आपके हृदय के भीतर है. If I was Peter and every single hope that I had, it would stripe away from me, what I would have done, what you would have done, my people. अगर मैं पतरस होती और मेरे रास्ते से सारे रास्ते आगे चलने का खत्म हो गया होता, तब मैं क्या करती? आप क्या करते उस जगह पर होते? And that sudden disconnection that Peter had, that sudden disconnection from Jesus, and he was all shattered and he didn't know what to do. और वो अचानक से बंधन टूट जाना उस एकमात्र हिस्से से जिससे के पर वो बहुत विश्वास करते थे, वो completely बिखर गए, वो पूरी तरीके से बिखर गए. When you see, my people, one in verse Matthew 26, जब मेरे प्रियो आप उस वाक्य में देखेंगे मत्ती 26 का, ओके, मैथ्यू 26 का 73 पर अगर आप देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ो, read it in Hindi. यस. थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है. My people, तेरी बोली, your accent, Peter's accent, his walking, his talking, even he tried to mingle up. If you see a youth, I just want to, अगर मेरे प्रियो, जब हम आपको बताते हैं एक्सेंट के बारे में, बोली मतलब उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से उनको यह पता चल गया. The same way, my people, when there is a youth, a lot of youth come to me for counseling and come to us for counseling. We both sisters are certified counselors, and when we counsel them, उसी तरह से जब बहुत सारे युवा युवती हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जैसे कि हम दोनों बहन मैं और मेरी बहन सर्टिफाइड काउंसलर हैं. So the same way, when we counsel them and when they go back home and they start on doing prayers and they read Bible, and suddenly some people come up, and those people get a little bit of shy when someone tells, oh, you have become so spiritual, huh? You're reading Bible, you're praying and this and that stuff. And at that moment, that person shatters. They feel that, oh,
it's not my thing, then that person starts to say curse, start cursing. यस तो जिस तरह से युवा युवती आते हैं काउंसिल हमारे पास काउंसिल के बाद उसके बाद वो आकर्षित होकर परमेश्वर में बढ़ते हैं और फिर दुआ प्रार्थना करते हैं और स्पिरिचुअली जब बढ़ते हैं तो उनके कुछ दोस्त और बाकी जो दोस्त लोग युवा युवती आके बोलते हैं कि अरे तुम बहुत ही ज़्यादा आत्मिक रूप से बढ़ गए हो तो उसी वक्त उन्हें यह फील होता है कि अरे हम कैसे इतने आत्मिक हो सकते हैं उस वक्त वो बिखर जाते हैं. In 74, Peter started cursing, you know. He was the disciple of Jesus, but when you see how the disciple of Jesus could start cursing, how could he curse and deny the Lord? तो पत्रस 74 वर्ष में धिक्कारने और शपथ खाने लगा कि मैं परमेश्वर यीशु को नहीं जानता. तो कैसे कोई ऐसे धिक्कार सकता है और कैसे शपथ खा सकता है झूठ बोलने के लिए? My people, if you be in Peter's place, and I know you are in a place somewhere your hope might have gone, somewhere you are thinking, I am not financially stable, how am I going to feed my family, how am I going to get my career, how am I going to complete my studies during this lockdown, how am I going to do all my stuffs, the hopes are gone. मेरे प्रियो अगर आप उसी वक्त पतरस के जगह पर होते तो शायद आप भी इसी तरह से सोचते कि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं क्या करूँगा अपने जीवन में, ऐसा आप सोच सकते हैं. So at that time, you know, why God is letting Peter, why already Jesus Christ, or why already God prophesied that Peter, you will be denying me 3 times before the rooster. मुर्गा बांधने से पहले. Yes. तो उसी वक्त यीशु ने पहले से ही भविष्यवाणी किया था कि पतरस तुम मुझे मुर्गा बांधने से पहले 3 बार इनकार करोगे. Yes. Yes. So how the same way, I just want to tell you, if we are in Peter's place, our all hopes are gone. But Lord is at that time, He wants us to remove all our unprofitable things from our life and let the profit, because at that time when Peter would not have denied, or whether at that time he would not have moved away from the God where God was getting crucified, the churches would not have built. In the foundation of Peter, it would not have built. Let me tell you, okay? You have to break it. Okay. Yes. Say once again. So at that time when I was telling, मैं हिंदी में बोल देती हूँ because my concept is going off. Okay, तो मैं ये बोल रही थी कि जब अगर Peter deny नहीं करता, if Peter would not have denied at that time, and Peter would not have removed that unprofitable things, because Lord has already prophesied that he was going to deny Jesus 3 times. If would not have done at that time, the churches that you are seeing right now, the foundation, the churches are built up is the Peter who has ministered. उस वक्त अगर पतरस ने 3 बार मुर्गा बांधने से पहले यीशु मसीह को इनकार नहीं किया होता तो आज जो आप स्थापित चर्च देख रहे हैं वो नहीं होता शायद. Are you seeing how Peter ministered his life? He let go all his depression. He let go all the things that Jesus got crucified, and I denied Jesus for 3 times. But I was the one who used to love Jesus a lot, but I only denied. It would have been such a betrayal. He would have felt so much of guilty inside. Yes. तो पतरस ने उस वक्त यह सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दिया कि वो यीशु से कितना प्रेम करता था. उसने 3 बार यीशु को मुर्गा बांधने से इनकार किया. इतना बड़ा एक तरह का धोखा हुआ उनके साथ, बट ये धोखा किया उन्होंने. बट ये सारा जो गिल्ट, सारा जो अंदर उनका जो ताड़ना था वो सब उन्होंने दूर किया और परमेश्वर के कार्य के लिए वो आगे बढ़े. उसी वजह से आज हम स्थापित देखते हैं कलीसिया को.
My people, I just मेरे want to प्रियो। tell you, are you broken? Are you broken? मैं आपको पूछना चाहती हूँ मेरे प्रियो, क्या आज आप टूटे हुए हैं? Are you broken? Can you tell me the measurement of your brokenness? क्या आप मुझे वह नाप कर बता सकते हैं कि आप कितने टूटे हुए हैं? When I was a youth, I used to feel, oh, life is all fairy tale. जब मैं युवा थी तो मैं I'm still a yuva, but I got anointed. Yes, when I was young, at 10th, 8th, 9th. Yeah. हाँ, तो जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि ये सारा जो आगे का दुनिया है वो बिल्कुल एक कहानी, एक फेरी टेल की तरह है, मैं ये सोचती थी। Okay, let's come to the serious point. Are you broken, my people? तो मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहती हूँ, क्या आप टूटे हैं मेरे Can प्रिय? you see inside your heart? You feel, oh my God, this people betrayed me. Those people took my money. This woman whom I love, she doesn't love me back. This man whom I love, he doesn't love me back. My children doesn't listen to me. My children are drinking. My children are smoking, and this and that. You are broken inside. What is the measurement of your brokenness? तो क्या आप ये नाप सकते हैं कि आपका हृदय कितना टूटा हुआ है? क्या आप यह अपने हृदय में यह देखते कि अरे इसने मेरा पैसा चुराया, या मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसने मेरे साथ यह बुरा काम किया है, वह बच्चे स्मोक करते हैं, स्मोक मतलब आपको पता होगा धूम्रपान करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो। And you are broken. And I cannot tell you what is your percentage, because in your life, your percentage is 100% brokenness. हाँ, यह मैं नहीं बता सकती आपका हृदय, मैं बिल्कुल भी नहीं नाप सकती कि आपका हृदय कितना टूटा हुआ है, क्योंकि यह आप जानते हैं और सब लोग के जीवन में यह अलग अलग रहता है। And your brokenness, everyone brokenness is 100%. सब लोगों का टूटा हुआ हृदय वो पूरी 100% होता है। And let it be more higher than 100%, my people. और यह 100% से भी ज्यादा हो सकता है मेरे प्रिय। Because I'm going to tell you, because the deeper you are broken, my people, क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जितना अंदर से और गंभीरता से आप टूटे हुए हैं, the greater your foundation is going to become. Amen. उतना ही बड़ा आपका स्थापना होगा। Amen. 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 The deeper your foundation goes, my people, the higher our heights are going to become. Amen. जितना गंभीरता से आपका स्थापना होगा, उतना ही ऊंचा आपका राज्य स्थापित होगा। Yes, amen. Why you need a greater foundation in your life? आपको क्यों वह महान स्थापना चाहिए मेरे प्रियो? Because you want to fly above. Because Lord has written your name above in the skies, and your foundation is going to make you higher and higher. Your building is going to make higher and higher to the place where Lord has written your name. Amen. क्योंकि आप चाहते हैं कि आप ऊंचा उड़े परमेश्वर के नाम से, और आपका स्थापना और भी ऊंचा हो, और आप विजय पाए जो भी कार्य आप कर रहे हैं। Amen. How Peter moved his life. जैसे पतरस ने अपना जीवन को मूव किया, the same way, my people, right now you are going to move your life. You are going to build your foundation in your brokenness. Amen. उसी तरह से आप अपना जीवन को मूव करने वाले हैं मेरे प्रियो। आप अपना स्थापना करने वाले हैं बहुत ही महान रूप से। Because you are going to reach that height. Are you there with me? Are you connected with me? Say, I receive in the mighty name of Jesus. क्योंकि आप उस ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हैं मेरे प्रियो। क्या आप मेरे साथ हैं? तो आप जोर से बोलिए आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? और बोलिए हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। Oh yes, my people. Oh, It हाँ, मेरे got to प्रियो। go. It got to go, my people. आपकी depression, your depression needs to go. Your anxiety needs to go. The people who are not doing profit to your life, they need to go in the mighty name of हाँ, Jesus. आमेन। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन से वो सारा कष्ट दूर होना है। आपके जीवन से वो सारा ताड़ना दूर होना है। आपके जीवन से वो सारे चीज और लोग दूर होने हैं जो आपके जीवन में
किसी भी तरह का लाभदायक Oh, नहीं yes, है। yes. If you have heard my voice right now, if you have heard all this message that I have presented you, if you are that Peter who saw all the miracles, who walked on the water, who's walking in the faith, my people, you are that Peter, and you are going to build your foundation with your brokenness. Are you there Amen. with me in the mighty name? आमेन। अगर आपने आज का वचन सुना है, अगर आज आप मेरे साथ हैं, तो क्या आप वो पतरस है जिसने विजय पाई है? क्या आप वो पतरस है Oh, जिसने yes, हर Lord. चीज Yes, को Father. Hallelujah. रिमूव किया, जिसने Hallelujah. हर चीज को दूर किया और वो आगे Oh, बढ़ा yes. परमेश्वर के It लिए? got to go, my people. इसको Because- जाना है मेरे प्रियो, Yeah, क्योंकि because I'm ready to grow. क्योंकि मैं तैयार हूँ जाने के लिए। Are you ready to go, my क्या आप people? तैयार हैं जाने के लिए मेरे प्रियो? Are you ready to grow, my people? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो बढ़ने के लिए? क्या आप और बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? Oh, In the yes. mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus. यीशु As के we नाम come to- से। As we come to the end of this message, अभी जैसे did you कि hear me what I said you? Are you that Peter, my people? Whenever I see Peter's life, it always connects to my life. You know? जैसे ही मैं पतरस का जीवन देखती हूँ, मैं हमेशा अपने जीवन को उधर कनेक्ट करती हूँ My मेरे people, प्रियो। you might have also denied Jesus. You might have also said, Parmeshwar koi nahi hota. Lord is not there. He is not listening me. And that way you denied. But Lord knows your denial because you are denying Him because of your brokenness inside. हाँ मेरे प्रियो, कई बार आपने भी यीशु को इनकार किया होगा, आपने भी परमेश्वर को इनकार Yes, किया होगा yes, कि amen. ऐसा परमेश्वर कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई भी परमेश्वर नहीं है। आप भी उस समय पर रहे होंगे। Yes, our God is a merciful God. हमारा यीशु बहुत You दयालु would है। not have seen any God like that. आपने I'm telling you, my people. आपने कोई भी परमेश्वर इतना दयालु कभी नहीं देखा होगा। When you just kneel down and pray, even if you pray anywhere, even if you are in a garbage place, no matter what, only Lord needs to hear your voice that Amen. I'm your Amen. child, oh God. I'm Amen. here, oh Lord. I'm broken, Oh, Lord. yes. Amen. Lord, I don't want to die, Lord Jesus. I don't want to die without your anointing, oh God. Lord Jesus, my financial things, Lord, you are going to do a fresh new start, oh Lord. जैसे ही आप घुटनों पे परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कोई भी जगह Oh, पर yes, हो, Father. चाहे आप कचड़े के पास हो, Hallelujah. चाहे आप अपने Oh, कार्य yes, में God. हो, Hallelujah. परमेश्वर आपको हर Hallelujah. We चीज worship में you, oh God. विजय देंगे। Yes, right now, my people out there, if you're listening me, ask God, Lord, fill us with the fresh fire. हाँ मेरे प्रियो, अगर आप आज यहाँ पर सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर को बोलिए yes, God. कि मुझे Hallelujah. भर दीजिए आपके पवित्र आत्मा से। Oh Lord, I need the joy, oh Father. मैं वो खुशी चाहता हूँ Lord, परमेश्वर। I'm letting go all my depression. मैं सारे डिप्रेशन को दूर करना चाहता हूँ Lord, I'm परमेश्वर। letting go all the anxieties, oh God. मेरे जीवन का सारा कष्ट और सारा Oh Lord, घबराहट my दूर Father. करना चाहता Oh हूँ। Lord God, right now I'm letting go all the people who are troubling in my life. हाँ परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन से वो सारे लोगों को दूर करना Oh, चाहता हूँ yes, जो yes, हमें yes, God. परेशान करते हैं। I'm now letting go all the forgiveness, Lord. I'm forgiving everyone, oh Lord Jesus. मैं सारे उन लोगों को दूर करना चाहता हूँ जिनको God. मैंने माफी नहीं किया, उनको सबको क्षमा करना चाहता yes, हूँ। Lord, because I want peace in your life हाँ right now. परमेश्वर, क्योंकि मैं अपने जीवन में वो In the शांति mighty चाहता हूँ। name of Jesus, यीशु मसीह के I महान want नाम the से। joy of Father, Lord. मैं वह खुशी चाहता हूँ। Oh God, you are here right now. Tell it with me, amen. I receive. Oh, Are you yes. there? In the हाँ। name of Jesus. हाँ परमेश्वर, आप हमारे मध्य में हैं। सारे जो कोई भी Oh, सुन my रहे हैं, people. बोलिए आमीन। हाँ आप हमारे बीच में You हैं। know how Peter moved. How Peter moved, are you watching? He moved forward. He left behind everything. He left behind where he saw Jesus dying on the cross. He left behind that thing. If I would have been in Peter's place, oh my God, I don't know what I would have done. But he let go and he moved forward and praised the Lord and he ministered, Lord, and Amen. built up churches. Oh
ओह यस, अगर मैं पतरस की जगह पर होती yes. तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती, बट पतरस ने हर चीज को जाने दिया। उसने वह परमेश्वर यीशु को क्रूस पर लटका हुआ देखा, उसने वो 3 बार यीशु को मना किया, उसने नहीं जानता हूँ बोला, हर चीज को उसने जाने दिया और परमेश्वर के कार्य के लिए वो आगे बढ़ा और उसने स्थापित की कलीसिया। That was a big heart attack for Peter when he saw Jesus doing miracles in front of his eyes. When he saw when Jesus used to love him so much that Jesus said that you can also walk in the water, on the water. So he was walking. You just feel that spirit, my people. If you are denying Lord right now, you're again crucifying Lord. If you are denying right now after knowing His blessings that you are living right now, your family is alive because of Jesus. Your family is living because of Jesus. Then again you are crucifying and you are going very down, oh my people. पतरस के लिए बहुत ही अविश्वसनीय था कि उसने यीशु को आश्चर्य कार्य करते हुए देखा था। उसको यीशु ने बोला था कि हाँ तुम पानी पर चलो। उसने कितने सारे आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था पतरस ने। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। उसने देखा है यीशु का प्रेम उसकी तरफ के लिए। तो ऐसे आप जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जिधर आपने यीशु को इनकार किया होगा, अपने परमेश्वर को इनकार किया होगा, उनको दुख दिया होगा। And right now, my people, और अभी मेरे प्रियो, move forward. आगे बढ़िए। Are you ready to move forward? क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने Are के you लिए? going to take your brokenness and make it a highest building in the mighty name of Jesus? क्या आप अपना टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय को लेके उसको जोड़ के बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? Are you going to reach that heights that Lord has appointed you? The Lord has written your name in the mighty name of Jesus. Amen, I receive. हाँ, क्या आप तैयार हैं उस ऊंचाई के स्तर पर पहुंचने के लिए जहाँ पे परमेश्वर आपको लेना चाहते हैं? Amen. Comment down below. I just want to know who all are writing, who all are ready in the mighty name of Jesus. मैं बस If जानना you चाहती have हूँ prayer कौन-कौन points, तैयार है? yes, as we have come to the end, oh my जैसे कि people. हम वाक्य के बहुत ही अंत में आ गए हैं, Yes. आप अपने सारे प्रार्थना के रिक्वेस्ट आप टाइप डाउन कर सकते हैं Amen. कमेंट बॉक्स में बिलो, Amen. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। I'm going to read a verse for you, my people, and please comment down below all your prayer requests, and Arpita will be reading the verse. Hebrew 12, 1 and 2. Hebrew 12, 1 and 2. So my people, are you listening to me right now? Comment down all the prayer requests right now. We'll be praying for you. The anointing that we got. You are also there. You just need to believe it. Your small belief is going to change your life like Amen, amen. Amen. Hebrew 12 and 1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne. Yes, amen. Let's read it Hindi also. Comment down below the Hindi verse. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करते हैं in the mighty name of Jesus. Amen. वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Amen. My people, fight a little longer. Oh yes. हाँ मेरे प्रियो, थोड़ा सा और लंबा आप अपना जंग जारी रखिए। Yes, amen. Because it will all be worth at the end.
जी हाँ, क्योंकि ये सारा चीज बहुत ही कार्यदायी होगा, लाभदायी होगा अंत में। आमीन। And when you turn, और जब आप मुड़ेंगे, और when तब भी आपको अगर कोई नहीं मिलता है, परमेश्वर आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे। Amen. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ya Baba Revashendo. Let's pray together, my people. Hallelujah. I'll be praying for you in Hindi and in English too. I'll try in Hindi. Yes. Hallelujah. 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 Glorify your name, Lord. Hallelujah. Close your eyes, my people. Oh yes. Ah, yes, Lord Jesus. We have received a lot of prayer Hallelujah. requests Hallelujah. today, just in the live. Hallelujah. And we thank Hallelujah. Lord. हम परमेश्वर की आराधना Oh, करेंगे कि yeah, हमें but- बहुत सारे prayer requests मिले हैं. Oh, yes. Hallelujah, hallelujah, Oh, hallelujah. yes, Father. We glorify your name, Lord. Oh, thank you. We Father. magnify your name, Lord. हम आपकी yes, आराधना परमेश्वर करते हैं क्योंकि आप महिमा और आदर पाने के Yes, योग्य God. हैं. Yes. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, yes, पिता. Lord. Nothing is impossible for you, Oh, O yes, God. Father. You are almighty, O Master. Oh, You are the Alpha and the Omega, Lord. Hallelujah. You are a healer. You are a protector. You are a yes, provider, O Master. Ah, Baba Ravash. Oh, the Hallelujah Shandiri Thank you, Lord Jesus. Lord, right now we are Thank praying you, for Basu Priksha, O Master. Oh, yes, Lord. He has asked for the broken and depression and needs for Oh, prayer, Lord. yes. We are praying for him right now, Lord. Your हम depression अभी is gone. हम अभी बासु ब्रदर के लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर पिता. Whatever Oh, depression Baba he Bashan. has, Lord, whatever Yes, issues God. he has, Lord, no one can Ah. measure it, Lord. Yes. It is definitely beyond 100%, Oh, oh yes, Master. God. No one can touch it, oh Lord. No one can understand what he is Oh, going yes. through, oh Oh, Master. Baba Bashan. Only you are the one who can touch him, oh Master. Tayo Right Bashan, away, Lord. Lapara Stretch out your blessed hands, thank you, Lord. thank you, Just hold his heart, oh Master. Yes. Hold his heart wherever he feels that he has nothing to go. Wherever he is downtrodden. yes. Whenever he is feeling that I cannot yes. do this. Wherever he is feeling that he is yes, lonely. Father. Yes, God. Whenever he is feeling that no one is there for him, Oh, Lord, yes. just make him feel yes. that you In are the for him, mighty oh name. Master. In the mighty Oh, name. yes, Lord, you are for him, oh Master. Oh, yes, You Lord. comfort him, oh Lord. In the You mighty remove name. all the anxiety and all the depression from In him the right mighty away, oh name. Master. In Let the him mighty feel name. happy and glad right away, Lord. I pray for Sister Elizabeth, Lord. Yes, God. She is a worshiper, oh Master. She is ready to grow, Lord. Oh, yes, yes, Lord. God. Grow her more and more and more for your glory, oh yes, Master. Father. उनको Hallelujah. बढ़ाइए परमेश्वर आपकी Abba, महिमा yes. के लिए. You Yes. have given her a talent, Lord. Use it yes, for God. your glory, Hallelujah. Master. Yalabara Make worship. it not just 10 or 20, Lord. Lord, make it hundreds and 500s and thousands, Lord. Use her Yes, mightily for Lord our glory, oh Jesus. Master. We pray In for the mighty name. we pray for Visha Gaikwad, Lord, for Yes, the healing, Visha Lord. Gaikwad. Yes, Oh, Father. yes, Lord. You are a healer, Master. Oh, yes. You are a miracle worker, oh Master. Right now, oh, You Father. are a way maker, oh Master. Oh, yes. Stretch out your healing hands. yes, Father. Stretch out your healing hands right away to Vishwa, the oh mighty Lord. name Oh, of yes, Lord, you're touching. Yes, Oh, yes, you're touching, Lord, taking Oh, away yes, all the Father. disease, taking away Hallelujah. all the sufferings, Make it a taking away testimony. all the pain, Lord. Oh, testimonies. Clean her right Yes, now, God. oh Master. Yes, yes. Oh, Tikala Bidia Shandi Oh, Arabo yes, Shanda. God. Zihole We are Bianga going to Kinama the Shundira Baraba Oh, Shande. yes, Father. Oh, yes, receive it in the name of Jesus, Oh, you're in healed. the name of Oh, Jesus. receive it in the name In of the Jesus, name you're healed, oh Lord. Yes. Oh, yes, Lord, I receive it too. I pray for Sanjeevan Kumar Pani, Yes, oh Lord. Lord. Hallelujah. I pray for his family, O Master.
I pray for his family, Lord. Oh, yes, I pray Lord. for this entire family, Lord. Amen. You know what are the crises they are going through. Amen, You Father. know what are the issues they are going Amen, through, Mama, Lord. Masha. You are for them, Lord. Shake, You shake, are the shake. protector, Lord. Alpha Send Shanta. your angels and protect Oh, the family, Shanta, Lord, Shanta, from Lava all Shanta. the issues, If from I all shall the love problems, from all the financial Amen, crisis, amen, from amen, all amen. the discouragement, Lord, from all the non-acceptance, Lord. Give Yes, them Lord. favor in the name of In the Jesus. mighty Holy name of Abashandi Rabashandi In the Biribi mighty Shanda. name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. I pray. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Oh, yes, Lord. There are many more people, Shanda, Lord. Lava I pray for Shanda. each one of them watching us right now. Oh, yes. Yes, Lord Jesus. We pray for Sandhya Kamble. रूबी के लिए प्रे करें उसके रिपोर्ट और सोनोग्राफी अच्छा आना चाहिए. Oh, yes, yes, yes. Yes. We pray for Ruby's sister, Lord, right now. It For will her come. sonography, Lord. Yes. Touch her, Lord. Protect her, Lord. Protect the baby, Lord. Let it be fit and fine, Lord. Whatever, the mighty whatever name pain or whatever anxiety they are having, Lord, just remove it, Lord. Oh, Let yes. them have that comfort and happiness Hallelujah. and that healthy feeling, Lord, and that comfortable feeling, Lord. Rabba Let Rabba that Shanda. bless that family, Lord. I Let pray the for baby. I pray for Rupinder Kaur, oh Lord Jesus. Yes, yes, He wants to grow more in prayer and fasting, Lord. Oh, Lord, yes. this person is coming to you, oh God. Oh, and yes, you Father. are taking him, Lord Jesus. Yes, You are melting his everything, oh Father, Lord, Oh, and Shanta creating a Labakasta. beautiful gemstone, oh Father. Lord. yes, Father, In the amen. mighty name of Jesus. Oh, yes, Lord. Abare Hallelujah. Vashinda. Oh, yes, Lord, Lord. I pray for Anita Salve. God. Yes, Lord. Praying for her family, Lord. Yes, Lord. Lord, the family, Lord Jesus. It's our family, Lord. Oh, yes, Bless it Father. in the mighty name of Oh, Jesus. yes, Blessings Lord. and blessings and blessings. Oh, Lord. Receive it in the name of Jesus. Testimonies, amen. Oh, You yes, are going Lord. to testify in the mighty Oh, name of yes, Jesus. Lord. Hallelujah. My people, you are going to testify. Yes. Pray for Vishal Gaikwad in Yes, the Lord. mighty name of Jesus. Yes, Vishal, we pray for you in the mighty name of Jesus. In the holy name of Jesus. Oh, yes, In Father. the Ravashinda. Do you receive it in the mighty name of Jesus? Oh, Say, yes. I receive it in the mighty name of Jesus. I receive, Lord Jesus. Lord, you have anointed my people, oh Lord Yes, Jesus. Lord. The Hallelujah. grace, Lord, the way you have built us up, oh sisters, Oh, oh Father, yes, Lord, Father. in the Hallelujah. mighty name of Jesus. Yes, I Lord. pray for them, oh God, Oh, as yes, we are Lord. not able to go to the churches, oh Yes, Father, Lord. Lord. This is the only way we are connected, Lord. Yes, Father. Soon we are going to meet them, oh Father, Lord. Oh, Soon we amen. are going to see them, Almighty God. Oh, And yes, soon we Lord. are going to listen testimonies in the mighty name of yes. Jesus. Oh, yes, Father. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Diana, we pray for Diana. Diana, in the mighty name of Jesus. Oh, yes, Lord, We we pray pray for for Diana. you, oh God. Yes. Lord Jesus. Diana is praying for her father. Yes. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray for her, Lord, whatever struggle she is going through, Yes, oh Lord, Lord. whatever relationship problem she is going through, oh Father, Oh, Lord, yes, whatever Father. family problem she is going through, oh Lord Jesus, Yes, in the Lord. mighty name of Jesus, Amen. in the mighty name of Jesus, receive it, dear. Oh, amen, amen, Your amen. every situation, your life will never be the same again. Oh, Your life will Santa never be Labisha. the same again. Say, Yes. I receive it in mighty Amen. name Hallelujah. of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Thank you, Lord. thank We you. glorify thank you, your Jesus. name, Lord. Oh, yes, We Father. thank you, Lord, for answering our prayers, Abaravashanda. Lord. Yes, Yes, thank you. Lord. Thank you, Lord, for all the answers which you have given, Oh, Lord. thank we you, receive it, oh Jesus. Thank you. We have conceived it, oh Master. We Oh, have yes. received in the name of Jesus, Yes, oh Lord. yes, oh Father. We once Hallelujah. again pray for the entire spiritual fellowship Oh, church, Baba, Lord. yes, Let it Shata. grow more and more for your Let glory. it grow, mighty name of We Jesus. pray for Bishop Salve also, Lord. Oh, Bless yes, him, God. Lord. He's your anointed man, oh Lord. We pray for each one of it responsible for. I pray for each one of us who has been connected today, Lord. Bless each one of them, Lord. Stretch out your blessed and healing and a protective hands towards each one of them, oh Master. I ask this prayer in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Oh, thank you, Father.
Bless the Bless the Lord, Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. Amen and amen. Thank you, my people, for connecting. And we bless you. We are praying for you. And if you our family is a certified counselors. My father is a reverend, and you can always talk to us. And we are really very friendly people, and we are your youths, and we have gone through a lot. And how we overcome that? Keep on following Kusha's ministry. It's up above there. You could see it and go there and follow us so that you will be updated when we are alive, and give us your testimonies. Your testimonies is what is making God's kingdom. Amen. Amen. You want to say something? Yes, so stay connected, keep up with your prayer. Pray for our ministries as well, Kusha's ministries, entire family. In any time of prayer or counseling, by God's wisdom and by God's guidance, we are always there to help you and guide you. Amen. Amen. So may the Lord bless you. Shalom. Shalom. Thank you so much.